Dear friends, today we are going to discuss about ear. First, syllabus, elementary knowledge of structure and functions of the organs of taste, smell, ear, eyes and skin, physiology of pain. So, these are comes under special sense. So first, ear. What are the different question comes from this chapter? Describe the structure of different parts of the ear and discuss the physiology of hearing and write short note in ear. So let us discuss. The main function of the ear is serve as an organ having both hearing as well as equilibrium function. Before this discussion, we should know that ear is always helps for hearing, but another major function, that is equilibrium, that means it maintain the balance. So this is the important function of ear, not only hearing but also equilibrium function. Apart from this, see the figure. This is the ear. See in this figure, this is the external part. This is the external part. This is the middle part. This is the middle part, and this is the inner part. External ear, middle ear, inner ear. It is divided into three parts: external, middle, and internal. Again, the external part, it is made up of external auditory canal and auricle or pinna. So let us discuss one by one. So first, the ear is divided into three parts. It consists of three anatomical parts. One is external ear, then middle ear and internal ear. So the external ear is consist of auricle and external acoustic meatus or external auditory canal. Similarly, middle ear consists of three small auditory ossicles, that means bones, and internal ear of tympanic membrane. The internal ear consists of vestibulocochlear organ. So let us discuss in Odia also. कान, ear. आमे जानिछु जे कान सुनिबा पई यूज करछु, but apart from this, hearing another function, that is equilibrium, balance maintain करके रखुछि. यदि आमे कान नथिबो कोन हबो, आमे पडिजु, बैलेंस टाक मेंटेन करि परिबोनी, सीधा छिडा ही परिबोनी, साइकिल चली परिबोनी. So not only the hearing but also maintain the equilibrium. So the first sentence is serve as a hearing and equilibrium. This is the function of ear. Now comes to the anatomical part. Eta gotito hoichi external part baharo, middle part mochi au internal part को नेकी. ये जो external part बाहर को कौन देखा जाउची ना कान भलिया देखा जाउची, that is called auricle or pinna. पहले external part, that is consist of auricle and external auditory canal. but canal भलिया पास हिच. So जो बाहर पाख ताले काहाकु काहाकु नेकी तियारी ना external ear consist of pinna and external auditory canal. Again, first ear is divided into three parts: external ear, middle ear and internal ear. Again, external ear is consist of auricle, pinna or external auditory canal or external acoustic meatus.
तमने कौन है तले एक्सटर्नल ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को लेकी गठित। तो देखिए पिन्ना कौन the visible portion that is commonly referred as the ear जोटा को हमें धरिकी टाणुचे कान बा धरुचे बा जो पिंधुचे ornaments सेटा होची पिन्ना और the visible portion जोटा हमें देखी पारुछु। So what is the function of pinna? Na helps to localize the sound sources when the sound direct comes into the ear. Each individual pinna creates a distinctive imprint on the acoustic wave traveling into the auditory canal. ताले जहाँ भी whatever the sound reaches, it wave टाकू travel करिया पे कोड को पठे दिए कोड को जहाँ भी सपोज साउंड आसुची फास्ट कौन करिवो पिन्ना सेटा को भीतर को छाड़ दो को भीतर को एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भीतर को। दिस इज द पर्पज ऑफ पिन्ना दिस द विजुअल पर्सन दैट कॉमनली रेफर्ड एज ईयर। तले इटा हला पिन्ना जोटा हमें देखि पारछु ता भीतर को कोन रहिला ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और एक्सटर्नल acoustic matters। इटा देखिबा को भले आइछि ना इट कंडक्ट द साउंड वेव इट कंडक्ट द साउंड वेव जो वेव टाको पिना पठेइथिबो ताको से कंडक्ट करिवो एंड इट इज ए approximately 3 cm length लंबाटा केते हेतुबो 3 cm and anterior wall of the floor are longer than the posterior wall and roof and medial third is bony and lateral two third are cartilaginous। कौन कहला तले जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल तर एंटीरियर वॉल टाको लार्जर और लॉन्गर देन द सी द फिगर द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल रो आउटर पार्ट टाको बिगर इन साइज एज कंपेयर टू इनर part of the external auditory canal or longer side। Then apart from this आउ कौन रहिला ना जो external auditory canal रो bony part और the cartilaginous part। So it is made up of lateral two third are cartilaginous and the medial part bony bone रे middle region टा कहारो external auditory canal रो आमे जदी धरो कोन गुटे सॉफ्ट काठी हो बा हाथ पुरे की देखिले बोन टा को जणा पड़े जेति के अधिक पुरे दबो धरले जणा पड़े medial third is bony and lateral two third is cartilaginous। So this is all about your external acoustic matters or external auditory canal। Again a quick recap of external auditory canal or pinna or the external ear। Well, first ear is divided into 3 parts: external, middle, internal। External ear again it is made up of external pinna and external auditory canal। External auditory canal is made up of external part of the ear consists of pinna and external auditory canal। pinna कोटा जोटा में visually visible देखि पारु external auditory canal कोटा तापर से कौन करूची conduct sound wave ओ भलिया shape S shape केते सेंटीमीटर लेंथ 3 सेंटीमीटर लेंथ तार इंटीरियर पोस्टीरियर रे कौन अछि ना इंटीरियर फ्लोर टाको लार्जर देन द बा लॉन्गर देन द पोस्टीरियर फ्लोर और मीडियल थर्ड रे बोनी और लेटरल पार्ट रे कार्टिलाजिनस प्रेजेंट। दिस द एक्सटर्नल ईयर और एक्सटर्नल ऑडिटरी matters or external auditory canal। Now comes to the middle part of the ear। Middle ear it is
or tympanic cavity about 15 mm in anterior, posterior and vertical diameter. Shape of the bioconcave lens. The lateral wall is largely occupied by the tympanic membrane. तले आमे एक्सटर्नल पार्ट जाइथिले एबे आसीबा मिडिल ईयर ए मिडिल ईयर टा गोटे परदार तयारी मिडिल ईयर और टिम्पानिक कैविटी कौन अछि टिम्पानिक कैविटी ना 15 mm इन एंटीरियर पोस्टीरियर एंड वर्टिकल डायमीटर तले 15 mm फर्स्ट कानर कौन देखिथिले जोटा देखा जाउची सेटा हला पिना सेकेंड रे जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल देखिले ताहला 3 सेंटीमीटर माने 30 mm लेंथ टाको टिम्पानिक मेम्ब्रेन टोटल मिडिल ईयर रो लेंथ होची 15 mm टिम्पानिक कैविटी टाको कुआउची मिडिल ईयर और टिम्पानिक कैविटी ए टिम्पानिक कैविटी काहाकू नै कि तयारी ना टिम्पानिक मेम्ब्रेन आउ तीनटा बोन को लेके कंटेंट ऑफ मिडिल ईयर कैविटी को शेप हेतिबो शेप इज ए बायोकॉनकेव लेंस कार नाइ टिम्पानिक कैविटी रे बायोकॉनकेव काहे की ना जो लेंस रो ना सॉरी पर्दार टिम्पानिक मेम्ब्रेन रो शेपटा से भलिया हेतिबो कॉनकेव कन्वेक्स हमें पढ़ी उत्तल अवतल लेंस भितरटा खालो होइतिबो बाहर आड़ को बाहरी सेटा शेप ऑफ बायोकॉनकेव लेंस कार टिम्पानिक कैविटी रो ताले ए जो टिम्पानिक कैविटी इट इज मेड अप ऑफ टिम्पानिक मेम्ब्रेन जोटा को हमें कानर पर्दा बोली कहि थाउ आउ तीनटा बोन कैन यू इमेजिन द ईयर कंसिस्ट ऑफ बोन and whatever the sound passes it is through solid particle that is bone जहाँ भी साउंड आमे सुनुछु सेटा हम बोन देकी जाउछ कहले विश्वास होबनी साधारण मंच कोन हाडो देकी साउंड गोटे पास हो इट इज नॉट पॉसिबल but practically sound waves are passes through these 3 bones that is or ossicle, malleus, incus and stapes. These 3 bones are involved. So again middle ear consists of tympanic membrane and middle ear cavity that is ossicles or muscles or 3 vessels and nerves mainly 3 bones and tympanic membrane. Tympanic membrane कौन thin fibrous structure. It is circular and 1 centimeter in diameter. Total cavity 15 mm diameter. Tympanic membrane circular and तारो diameter टा 10 cm माने 1 centimeter 10 mm and covered externally by thin layer of stratified squamous epithelium. And lies obliquely at 55 degree with external acoustic matters or external auditory canal सहित केते डिग्री एंगल करके अछि 55 डिग्री कोनटा 55 डिग्री एंगल करछि ना कानर पर्दाटा सीधा सीधा न जो मिडिल ईयर रो पोजीशन रे जो पर्दाटा अछि सेटा एंगल करके अछि केते डिग्री ना 55 डिग्री कहा सहित लागिछि गोटे पार्ट लागिबो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल सहित आ गोटे पार्ट लागिबो 3 बोन सहित हला देन कंटेंट ऑफ मिडिल ईयर कैविटी ossicles malleus incus stapes masseter tensor tympani stapes 3 vessels and nerves कोडा टिम्पानी एंड टिम्पानिक फ्लेक्सर ऑफ ईयर दरकार नहीं एतिकी मने रखिया पई पड़िबो जे मिडिल ईयर इज कंसिस्ट ऑफ टिम्पानिक मेम्ब्रेन एंड 3 बोन्स दैट इज malleus incus stapes देन फंक्शन ऑफ मिडिल ईयर कैविटी कौन
na narrow oblique slit like air containing cavity in the petrous part of the temporal bone transmit the vibration to the tympanic membrane to the perilymph of the internal ear. That means जहाँ भी साउंड वेव आसीथिबो फास्ट कोठी कंडक्ट ना पिना बाहर जोटा देखुचे देन इंटरनल ऑडिटरी कैनाल रु टिम्पानिक मेम्ब्रेन ता जो साउंड वेव गले वाइब्रेशन होबो देखियो थरी दिबो देन पर्दाटा देन टिम्पानिक मेम्ब्रेन टू मेलस इनकस स्टेप्स 3 ossicles sound wave transmit vibration through the tympanic membrane to the internal ear. See the figure ossicles. तले एटा होची ear drum जोटा हमें पर्दा बोली कहू तले एडी किए कनेक्ट हिची एठी external auditory canal then पर्दा then tympanic membrane then malleus एटा बोनटा malleus then incus then steps एटा हला steps ए तीनटा बोन देकी जहां भी साउंड हमें सुनु छे जत्ते भी साउंड सब हाड़ देकी पास देकी जाउ छे so first let us discuss about malleus. The malleus is a hammer shape hatudi hammer hammer see the figure hammer shape bone connected with the incus one part very simple खाली लिखिबो कोन जे को शेप मेलस टा को शेप का सहित कनेक्ट हिच ना गोटे पटे टिम्पानिक मेम्ब्रेन पर्दा सहित another side incus सहित मेलस is connected in one side tympanic membrane and another side incus it is hammer shape and sound wave transmit from the external auditory canal to the incus बस मेलस is finished हबो कोन मेलस ना मेलस टाको हामर शेप रही थाए गोटे पटे टिम्पानिक मेम्ब्रेन कनेक्ट होई थाए आ गोटे पटे इनकस कनेक्ट होई थाए साउंड वेव टाको एक्सटर्नल टिम्पानिक मेम्ब्रेन रु इनकस को पठे दिए कि मेलस सी द फंक्शन इट ट्रांसमिट द साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम द eardrum to the incus now similarly incus avial shape and one side it is connected to the malleus another side steps it transmits sound wave from the malleus to steps very simple similarly steps it is a stirrup shape attach one side to the incus another side internal ear or that is called fenestra ovalis or oval window माने internal ear रो oval window रे जाई कि attach होची steps bone टाको हला ये कौन करिवो ना the oval window is adjacent to the vestibule of the inner ear see part of internal ear and the main things of steps is it is the smallest and lightest bone in the human body सबुठु छोट आउ सबुठु ओजन में भी कम lightest and smallest bone in the human body क्वेश्चन आसे that is steps present in the internal part of the ear where the sound wave transmit from the incus to internal ear or oval window or fenestra ovalis. This is the function of steps. तले हबो internal ear consist of मझी जो part the ear consist of tympanic membrane पर्दाटा को आउ ossicles तीनटा bone malleus incus steps पर्दा रे कोन लिखिबो बायकॉन्केव शेप 50 डिग्री एंगल की थाय तार जो tympanic membrane रो कैविटीटा 1 cm लिखियो then comes to the ossicle malleus incus steps malleus टाको hammer shape गोटे पटे कनेक्ट हिची एक्सटर्नल tympanic membrane सहित आ गोटे पटे कनेक्ट हिची incus सहित incus टा anvil shape गोटे पटे कनेक्ट हिची malleus सहित आ गोटे पटे कनेक्ट हिची steps सहित
से साउंड वेव ट्रांसमिट करे मेलस टू स्टेप्स स्टेप्स से भलिया गोटे पटे कनेक्ट हिची इनकस सहित आ गोटे पटे कनेक्ट हिची इंटरनल ईयर और फेनेस्ट्रा ओभालिस और ओभाल विंडो तार सबुठू स्मॉलेस्ट आउ लाइटेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एटा को आउ से भी से भलिया साउंड वेव टाकू इंटरनल ईयर पर्यंत the structure of the internal ear convey the information to the brain about the balance and hearing. That means the hearing and balance part mainly responsible for internal ear, and it is hearing is responsible for cochlear duct and balance is responsible semicircular duct. So cochlear duct is the organ of hearing. Cochlear duct is the organ of hearing. That means जो cochlear duct सुनिबा पई सहायता करूची और semicircular duct बैलेंस पई सहायता करूची हमें आरंभ रे पढितिलु जे कान केवल सुनिबा पई सहायता करेनी बैलेंस मध्य करिथाय तले इंटरनल पार्ट जो दीटा पार्ट रहिला कोक्लियर और सेमी सर्कुलर डक्ट से गोटे गोटे पार्ट सुनिबा पई सहायता करूची आ गोटे पार्ट बैलेंस पई सहायता करूची तले the nerve responsible for this function is the vestibulocochlear nerve vestibulocochlear nerve देकी जाउची और ए नर्व टाक प्रेजेंट अछि इंटरनल पार्ट ऑफ द ईयर रे जे की डिवाइड हेछि वेस्टिबुलर आउ कोक्लियर जे की गोटे बैलेंस पई आउ हियरिंग पई पार्ट्स आफ्टर एंटरिंग द इंटरनल एक्वास्टिक मीटर्स और इंटरनल ऑडिटरी कैन सो कोक्लिया जो कोक्लिया कहले जे हियरिंग पई सहायता करूची केमिति तार एनाटॉमी तार स्ट्रक्चर टा को भलिया तार फंक्शन टा केमिति हमको सुनिया पई सहायता करूची लेट अस डिस्कस कोक्लिया इज अ ट्यूब शेप लाइक ए सेल ऑफ ए स्नेल शामुका भलिया गेंडा भलिया है गुडे 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 फिगर सी इन द फिगर कोक्लिया एंड semicircular duct कोक्लिया एंदी गुडे 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 स्नेल भलिया हिच कोक्लिया देन is a semicircular canal or duct these are semicircular duct one is responsible for hearing another one for balance this is the internal part of the inner ear or internal part of the ear ये जो बोन गुडा एटा पर्दा सहित बोन गुडा जंती कनेक्ट हिच मिडिल ईयर एटा होची इंटरनल ईयर एटा होची एक्सटर्नल सो one is responsible cochlea is responsible for hearing and the other part like semicircular duct is responsible for balance so nerve is divided into two vestibulocochlear nerve vestibular and cochlear one is balance another one hearing tale cochlea केमिति shape na tail of a snail which consists of coil gude gude hich dekhilu liquid filled tube that is separate from one another by membrane द्वारा separate हिच नल तो मिसी जिवे गुडे गुडे हला so जो ता भीतर liquid filled ही अछि so the liquid filled are separated by membrane the inner lining the lining of the membrane is specialized hair cell कौन अछि चुटी अछि that are sensitive to vibration जतले पिन्ना देकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल देकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देकी स्टेप्स मेलस इनकस देकी वाइब्रेशन टाको जायकी कोक्लिया रे पहुंचुची कोक्लिया contain hair like projection or hair so hair cells so these are very sensitive so they are with the help of vibration they are
sensitized. It contains the actual organ of hearing or called organ of Corti. Question comes 2 mark. What is organ of Corti? The inner lining wall of the membrane is contains specialized cells or specialized hair cells that are very sensitive to vibration. This is the actual organ of hearing or also called organ of Corti. लिखिए वो organ of Corti ताले कहाँ को जाए the inner lining wall टाकू जो गुड़े गुड़े ही की रही थी membrane द्वारा separate ही थी एवं तारो hair like projection ही थी hair like projection रे vibration टा easily catch करी पारे ताकू ही को जाए organ of hearing हमें सुनिबार organ बा organ of Corti. So that receive the sound wave and transmit them to the brain. ये cochlea ही responsible receive the sound wave from the internal ear and send wave or impulse to the brain. से पठे दबो कोडगो एरिया को hearing area हम पढ़ी थिले central nervous system, frontal bone, parietal, occipital, temporal. Every area is responsible for specific function. तेणु से जो hearing area को से पठे दबा impulse टाको. So semicircular duct which is responsible for maintaining the balance. So it consists of 3 interconnected loop-shaped tube at the right angle to one another. So this canal contain fluid and hair-like projection to detect the change in body position. Suppose muchidachi, bosichi or kim januche ame. Now with the help of this semicircular canal, it is also present hair cell. The membrane contain hair cells. So with the help of this hair cell, we can detect the position of the body. So it maintain the balance. Semicircular canal or semicircular duct. So the function of internal ear convert whatever the mechanical signal received from the middle ear, which starts as sound capture by the external ear, into electrical signal. That means mechanical signal to electrical signal रे convert करिवा पाई internal ear साहाज्य करे. The internal ear also contain receptor that detect the motion and position. जोटा कहली semicircular duct contain hair cells. Now comes to the physiology of hearing or mechanism of hearing. Most of the time question comes short note. What is the physiology of hearing? केमिति आमे शुणुचे? What is the mechanism of hearing? Now first, same thing what we have discussed. First, external ear receive the sound wave and direct them into the eardrum or tympanic membrane. ताले external ear sound wave टाकू receive करिकरी तार internal सॉरी द मिडिल पार्ट को पहुंचे दबो और टिम्पानिक मेम्ब्रेन पर्यंत और ईआर ड्रम पर्यंत देले कोन हबो साउंड वेव सपोज हमर पिन्ना आ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल रे पहुंचीला कोड को पहुंचीबो ना पर्दा पाकू टिम्पानिक मेम्ब्रेन पर्दा कोन हुए हल्ली बुले आमे कोई कान पाखरे जोर रे पार्टी करी पर्दा छिड़ी दिबो होय कि नै सो सिमिलरली सो द ईआर ड्रम वाइब्रेट हबो tympanic membrane ta vibrate habo in the response to the sound wave and these vibration are transmitted through ear ossicles. कहिछि जे ए जो वाइब्रेशन ता tympanic membrane रु तीनटा बोन देकी तीनटा ossicles देकी जो ear ossicle malleus incus steps देकी pass habo to the oval window. The vibration pass through the oval window on to the fluid of cochlea, where they generate wave in the limb. जो mechanical sound टाकू converted है जीवो कौन ना पढ़ी थिले mechanical to electrical signal रे.
So the wave in the lip include the ripple in the basilar membrane. So these movement of the basilar movement bind the hair cell. हम देखिले internal membrane of the hair, internal membrane ear रे कौन it contain hair cell. So with the help of this hair cell, the impulses sent to the brain. As a result, nerve impulses are generated in the associated afferent neuron. These impulses are transmitted by the afferent fiber via auditory nerve to the auditory cortex of the brain, where the impulses are analyzed and sound is recognized. ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରେନ୍ ର ହିୟରିଂ ଏରିଆକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେ ତାକୁ ଏନାଲାଇଜ୍ କରିକି ଇମ୍ପଲ୍ସ ଟାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ କାନର ଫଙ୍କସନ କଣ କେମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ନା ଫାଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଟାକୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଇୟର କୁ ଆସିଲା ମାନେ ପିନା ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଅଡିଟୋରୀ କେନାଲ। ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଟାକୁ ପଶିଯିବ ସେ କୁଆଡେ ଯିବ ନା ପର୍ଦା ପାଖକୁ ଟିମ୍ପାନିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ରୁ 3 ବୋନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ମେଲସ୍ ଇନକସ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ कनेक्ट ହେଇଛି इंटरनल ईयर सहित। इंटरनल ईयर रे कोन ହେଇଛି ना ओभाल विंडो बा आमे पढिले जो कोन पढिले ना कोक्लिया आउ सेमी सर्कुलर डक्ट अछि जे कि फ्लूइड ता भितरे अछि एवं हेयर लाइक प्रोजेक्शन मेम्ब्रेन गुडा रे हेयर अछि से माने सेटा को कन्वर्ट कर दियंती वेव टाकू जो मेकानिकल वेव टाकू इलेक्ट्रिकल वेव रे कन्वर्ट करि पारंती वेव इन द लिम्फ बिकॉज दे कंटेन फ्लूइड और हेयर लाइक हेयर सेल्स से माने देन जो नर्व इंपल्स टा वेव टा तयारी हला से नर्व इंपल्स टा को वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व एड देकी से पहुंचीबो कोडी ब्रेन रो को एरिया को ना हियरिंग एरिया से तापरे एनालाइज करिवो आ रिकॉग्नाइज करिके आमे सुनि पारु जे कोन कहिले बुल्लू सर व्हाट इज हियर एंड व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग व्हाट इज द मेकानिज्म ऑफ हियरिंग सो अगेन ए क्विक रिकैप हियर इट इज रेस्पोंसिबल फॉर द बोथ हियरिंग एज वेल एज मेंटेन द इक्विलिब्रियम बैलेंस इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स external ear, middle ear and internal ear. External ear consists of pinna and external auditory canal. Middle ear consists of tympanic membrane and 3 bone steps, malleus incus steps, and internal ear, cochlea and semicircular duct. So when the sound wave reaches to the pinna, to external auditory canal, to tympanic membrane, to malleus incus steps, then oval window or fenestra ovalis. So where the internal ear is present, it converts the mechanical wave to electrical wave, and the impulses are then transmitted or reaches to the specific area of hearing. So and where it analyzed and sound is recognized. This is the way of hearing or the anatomy and physiology of ear.